playing because ain't nice, I hate them. I feel the safest when the club let me bring in. Why you wanna see it smile again? Ain't they facing? They don't know that they contribute to the dairy payment. Say she don't around with she think you gon' me for free, what you with? When all the smoke like a hold on, brother, chase him. Say my name, I pop up like the boogeyman. The game over, dropping bangers with no hooks. And free my brother Leak, I hate I'm putting money again. If you ain't never calm down, I know, so I approached her with my palm out. Was on that, she in the county ring songs. Risk taker, beat they block with 50 on it. Hey, Echo, turn this beat off if I ain't tripping on it. I'm just on it. Not no fool man without no who got for a cousin, don't slide but won't. I get that when this can't seem to shake them clips of horror. Folks told me pull up to AZ, he got the for us. Stop viding on your war stories, be the for hey, another op. We need some more. We up the most, you know that been a score. 2-1. Yeah. Brother, tell me what we on, I'm on the same. I plan for cuz ain't nice, but I hate them. I feel the safest when the club let me bring in. Why you wanna see it smile again? Ain't they facing? They don't know that they contribute to the dairy payment. Say she don't around with think you gon' me for free, what you with? When all the smoke like a hold on, brother, chase him. Say my name, I pop up like the boogeyman. Game over, dropping bangers with no hooks. And free my brother Leak, I hate I'm putting money again. If you ain't never calm down. I know, so I approached her with my palm out. Was on that, she in the county ring song. Risk taker, beat they block with 50 on it. Hey, Echo, turn this beat off if I ain't tripping on it. आज पर्दा फाश करेंगे इन अनलिमिटेड दुकानों का। मेरे को मैं तो मेरा तो आज मैं एक बार फिर विजिट करूंगा कुछ वायरल अनलिमिटेड ऑफर चलाने वाली दुकानों को जानने के लिए उनके बिजनेस की सच्चाई। 149 रुपए में फ्रेंड्स बता देगा। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है, गार्लिक ब्रेड। ये है कॉर्न, ये है हमारी चीज एक्सपायर वाला है। इसे कुछ एक्सेस बता दे, मैं भूल गया। मेरी लास्ट अनलिमिटेड वाली वीडियो आने के 1 साल के बाद, एक्जैक्टली 1 साल के बाद आई एम एट द प्लेस जहां मैंने अनलिमिटेड वाली वीडियो शुरू कर दी। यू नो द प्लेस, यू नो द लोकेशन, दिस द प्लेस जहां पे 50 रुपए के अनलिमिटेड छोले भटूरे मिलते हैं। मेरी वीडियो बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, बहुत ज्यादा इनकी मार्केटिंग हुई, बट माय गेस इज कि जितनी ज्यादा मार्केटिंग हुई ना उतना इनके लिए 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचना मुश्किल हो गया। एंड दैट इज व्हाई आई एम सीइंग वेरी लेस क्राउड। मेरे हिसाब से ऑफर भी नहीं पड़ गया और ऑफर बेचने वाला भी नहीं पड़ गया। चलो चल के पता लगाते हैं 1 साल के बाद इनकी सच्चाई का क्या हाल है। ये देख लपेट रहा है छोले भटूरे मिल नहीं बंद मार गया। अबे तो बता रहा है दिक्कत हो जाएगी भाई। ये उनका बात खाने पीने की रोज में टेंशन नहीं लेते यार। इतना रेट बढ़ा दिया 10 नहीं तो होता है। मैंने वीडियो बनाई 10 मिनट काम चल गया, रेट बढ़ा दिया। नहीं काफी हो गया ना, 10 रुपए कम करवा दूं, मैं करवा दूं मेरे पर छोड़। अरे देखकर बहुत बुरा लग रहा है जब मैंने वीडियो बनाई इतना पॉपुलर करा उसके बाद अब सर ये देखो गर्मी की ये बहाने नहीं चलेंगे। देखो मेरे को बोर्ड में नहीं दिख रहा अनलिमिटेड वाला। मेरे को जहां तक पता लगा कि आपने अनलिमिटेड बंद कर दिया, वो पिछले बार आपने मार्केटिंग करना था। सही बोल रहा हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड आज भी चल रहा है 10 रुपए 50 का। 1 साल के बाद आपने अभी तक अनलिमिटेड चालू है? बिल्कुल चालू है। फर्स्ट डे जब मैं दुकान खोली तब से 1.5 साल हो गया अनलिमिटेड बंद नहीं। कैन आई सी? बिल्कुल ये तो धूप की वजह से बाहर नहीं अंदर भी अंदर इसे लगा दिया यार तरक्की हुई है। आज की वीडियो नॉट जस्ट अबाउट कि मैं रिव्यू कर रहा हूं, आज की वीडियो ऑल्सो अबाउट मैं अभी अंदर जाने वाला हूं। उसके बाद आई वांट टू डिस्कस विद यू एक अनलिमिटेड बिजनेस चलाने की मैथ क्या होती है, क्या खर्चा आता है, सारी चीजें हम बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर मैंने आपके बिजनेस में इतना भी कंट्रीब्यूशन किया हो ना आज आपको सस्ता सब दूंगा। प्रॉमिस आपको जाना मेरा लेट्स गो इनसाइड। हाय 10 रुपए बढ़ गए गाइस, 50 की जगह 60 के हो गए। बट छोले की शक्ल अभी भी कमाल है। चेक करो बाबू गलत देखिए वही का बना के मेरे को लगा ऐसा कर दिया। ये देख यार, ये देख अनलिमिटेड वेरी गुड। आज मैं एक ट्राई करूंगा। आई वांट टू सी वही वाला टेस्ट है कि नहीं है। इसमें 50 का अनलिमिटेड है, अब प्राइस बढ़ गया 60 रुपए। क्यों? सिलेंडर तेल काफी सारे खर्चे बढ़ गए, पर इतने खर्चे बढ़ने के बावजूद आपने अनलिमिटेड अभी भी रखा हुआ है। एंड ये सवाल मेरी बहुत सारी जनता का होता है कि इस इकोनॉमी में जहां पे पेट्रोल की मिक्सिंग होकर है वहां पे आप अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे खिला पा रहे हो। आज मेरे को उसकी मैथ समझाओ। ये प्लेट अनलिमिटेड कैसे है 60 रुपए की? टेल मी। इतनी बड़ी कॉस्टिंग है नहीं इसमें। मैदा छोले है, मैदा क्या कितने रुपए किलो आलू है? नॉर्मल इंसान 2 भटूरे खा लेगा, अनलिमिटेड के चक्कर में 3 खा लेगा तो इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसकी डाइट बहुत अच्छी है, वो खा लेगा जितनी उसकी लिमिट। पर एवरेज तो हमारी 2-3 भटूरे की आ रही है अनलिमिटेड। तो मतलब ये मैथ ये है कि 3 से ऊपर ऑन एन एवरेज कोई खा नहीं पाएगा। तो 4 भटूरे लोगे खाने के बाद क्या आप ये प्लेट लॉस में बेचोगे? मैंने आपको क्या बताया कि सेवा में लॉस ये एक तो साल है, चाबी देख रहा है साल साल पीछे। ये सेवा तो आना ही नहीं चाहिए। धंधे की बात कर, धंधे की बात मैं धंधे वाला आदमी हूं। हमने तो बोला ही ऐसा मैं जब रेड लाइट पे रुकता हूं ना धंधे की सोचता हूं। तो हम सेवा करें इसलिए आप भी जोड़ रहे हैं। 4 भटूरे की प्लेट बेचने की हाउ आर यू नॉट इन लॉस इन 60 रुपीस? टेल मी दैट। घटिया तेल में बना रहे हो आप, ऑयल चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइसेंस चेक कर सकते हो, हमारी लैब रिपोर्ट चेक कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो। पॉइंट ये कितना आदमी खा लेगा 4 भटूरे? लेट्स सपोज किसी ने 4 खा लिया तब आप लॉस होगा, तब लॉस है। लेकिन उसके बाद कोई दूसरा आएगा, हो सकता है वो एक ही खा ले। ए देख अरे प्रॉफिटेबल हो कह सकते हो, नहीं कह सकते।
यार ये सारे अनलिमिटेड वाले इतने डिप्लोमेटिक क्यों होते हैं? मेरे को समझ नहीं। मेरे को अगर आप बताना नहीं चाह रहे, वो छुपा रहे हो, मेरे को नाराजगी हो रही है, मैं खाना खा रहा हूं, छोड़ो। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपके बिजनेस में थोड़ा सा दिया, मानते कंट्रीब्यूशन किया। आपके कंट्रीब्यूशन में पता क्या है? लक्ष्मी माता पे चली जाती है ना, लक्ष्मी माता पे जाती है तो वहां धन नहीं नहीं नहीं, बोलते ये किसी शॉप पे जाते हो, लक्ष्मी आती है, देखो कि भाई ये YouTube की लक्ष्मी माता हमारी। यार फिर तुम मुझे बता सारे टाइप करके अभी एस्टीमेट लगा के बता दो, मेरा खून मत जलाओ कि ये कितने की प्लेट होगी आपके हिसाब से? ये होगी ज्यादा से ज्यादा तो इसका मार्केट बचोगे 2 से 3। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई। तो उसे 3 रुपए की मार्जिन में यूटिंग दिस बिजनेस। पिछली बार मैं आया था स्विफ्ट देखी थी, इस बार स्कॉर्पियो कैसे दिखाऊं मैं? अरे दोस्ती है। लेट मी ट्राई सम छोले भटूरे। पिछली बार के डेज के कंपैरिजन में भाई भटूरे अभी भी फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। चेक करो मेरी जान, छोले चेक करो आप, ये देखना। पिछली बार ये प्रोटेस्ट में मैंने ऐसे ही खाना चेक कराया था, देख ली मैंने बात सुनी वीडियो, अभी तक भुगत रहा हूं। समोसा यार मत याद दिलाओ, यार मत याद दिलाओ, ये देख मेरी जान, छोले चेक करो आप। लेट्स ट्राई। एक चीज बोल रहा हूं, टेस्ट कर। ओए क्या मेरी जान, पर एक शिकायत मेरी अभी भी पिछले साल भी थी, इसमें नमक बहुत ज्यादा क्यों? इसीलिए ताकि लोग कम से कम खाएं। जेन्युइन बता, आपको नमक ज्यादा लगता है, शायद आप नमक थोड़ा कम खाते मैं ना बहुत तीखी लगता है। मेरी बात आप टेस्ट करोगे, आप लग रहा है ज्यादा के लिए ये लो ना। क्या टेस्ट मजा आया। जेन्युइन बता, हलवाई अपनी मिठाई पूरी बताएगा, पर मैं बता रहा हूं मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा है। शाम में क्या करते हो और किस प्राइस पे करते हो बताओ? अनलिमिटेड नान थाली एंड अनलिमिटेड चाप प्लस रुमाली रोटी, प्राइस 120 रुपए में अनलिमिटेड नान थाली है। एक अनलिमिटेड वाली पाजी हुआ करते हैं मार्केट में बहुत पहले, उनकी दुकान निपट ली है। ये हरकत होगी वैसे दुकान में ना कहीं मेरे को लगता है कुछ चूहा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, मैं अंदर जा रहा हूं, थोड़ी तहकीकात करने। आज पता है अनलिमिटेड दुकान है, ऑयल खाओ मेरे को। एक डिपार्टमेंट है वो तो रेट डालता नहीं, हम तो डालें। मैदा दिखाओ अपना मैदा। मैदा बनाऊं आप मैदा कर रहा है, आप मैदा मिक्सिंग वाला बना रहे हो। मिक्सी में मैदा बोल रहा है। मिक्सिंग कैसे होता है? छोले दिखाओ, छोले दिखाओ। नहीं बड़ा मत, आप ये पकड़ा गया है, देखो बोल रहा है आपको। ये बोल रहा है यहां पे छोले बना दो। ये पकड़ेगा ये छोले के ऊपर पानी कैसे आ रहा है? छोले में मिक्सिंग करी है। इन्हें कैसे होंगे, तरी वाले कैसे बनेंगे? पानी तो डलता ही है ना छोले में। आलू चेक करो। हां ये देख क्या ये मेरे को स्मेल आ गई। हां 10 आदमी हैं, आपको सेल्फ लगाए थे। मान गया व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोगों के पॉकेट में होता नहीं है इतना कि 200 रुपए जल्दी हम पेट खाते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं वेरी गुड जॉब, जो भी कर रहे हैं बदमाश कर रहे हैं, लेकिन एक और दुकान है, चलिए उस पे चलते छापा डालें। So hello जी, सत श्री अकाल। For the second location we are at my friend Mawali, which you know my favorite shop is that is Banana Daba। मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, बफे प्राइस was 99 रुपए में अनलिमिटेड खाना। Now I want to see कि 2 साल के बाद यहाँ पे क्या बदलाव, कैसे ये 99 खाना बेच पा रहे हो, क्या अभी तक बेच पा रहे कि नहीं? That is my question to Mr. Wilpreet भाई, क्या हाल है? पुराने पोस्टर आपने हटाए नहीं, पर मेरे को पता है रेट बढ़ा दिया होगा, अब क्या प्राइस है बताओ? सिलेंडर जरूर बढ़ गया है, बट ये पहना था ऐसा बफे है जो आज भी उसी रेट में दे रहा है, पिछले 8 सालों से सेम प्राइस पे चल रहा है। Still 99 Still 99 only। What's the math behind the 99 only वाला restaurant? Let's go and find out। आ जाओ भाभी, सेम सेटअप है जी, सेम रौनक है, अभी भी भीड़ है। अच्छा ये कोई टाइमिंग है बफे का? बफे ऐसे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप चलता है बिना ब्रेक के। और भगवान की कृपा से रश कंटिन्यू है। वेरी गुड भाई, मेरी भी आपके लिए बहुत विशेष है कि ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ये मेरे को एक बिजनेस से ज्यादा सेवा वाला सिस्टम लोगों का प्यार से ही चल रहा है, सबसे मेन जो इसका एलिमेंट है वो है लोगों का प्यार। बट कैन वी फर्स्ट सिट एंड टॉक अबाउट द प्राइसिंग? जो लोग हैं ना वो सीखना चाहते हैं कि कला कैसे है, क्योंकि आजकल लोग हजार रुपए में भी बिजनेस चला के भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। बिल्कुल चलिए, ऐसा है कि हर बंदे का क्वेश्चन रहता है कि आप 99 में कैसे दे पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आज तक बड़े लोग की मिस्ट्री है, हमारे लिए थोड़ी सी मिस्ट्री तो आज तक हमारे लिए भी है कि जब हम कैलकुलेशन निकालने बैठते हैं ना तो हमें पर हेड कॉस्ट 120-30 रुपए आ रही है पर आज की डेट में। बट जब हम इसको ज्यादा ना कैलकुलेशन में जाके सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ चलाते हैं, लोगों को प्यार को देखते हैं या भगवान की ब्लेसिंग्स को देखते हुए, तो उसमें प्रॉफिट भी निकल जाता है। सबसे पहले Did you send out tomorrow's itinerary? I was just about to when I get back. Why? Jen's saying she's having second thoughts. That the talking points don't align with her core values. Two players future? Yeah, exactly. They don't feature anything बात करते हैं 99 में है क्या? 99 में हमारे पास 15 प्लस आइटम्स रहती हैं, जैसे कढ़ाई पनीर हो गया, दाल मखनी हो गई, टेंडर हो गया, भाई आपने ऐसी बात बोली लाइफ चेंज करेगी। कंटिन्यू मैसेज हमारे पास कढ़ाई पनीर रहता है, दाल मखनी रहती है, मिक्स वेजिटेबल्स रहती है, कड़ी पकौड़ा है, राजमा है, आलू मटर है, नूडल्स है, पास्ता है, सैलेड है, तंदूरी रोटी है, मिस्सी रोटी है, बटर नान है और स्पेशल लेमन पिकल है। तो ये सारा कुछ 99 में रहता है। बिल्कुल मैं आगे के सवाल बात करूंगा, खाना देखो क्योंकि आपको पता है खाना इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बहना ढाबा में हूं, चाहे मैं किसी प्रोटेस्ट में हूं, कहीं भी खाना इंपॉर्टेंट है। पंजाब में आए तो सबसे फेमस आइटम है कड़ी पकौड़ा। चेक करिए, चेक करो, जीरा राइस रहने वाली है राजमा, ये चेक करो। समोसा तो नहीं है? नहीं समोसा नहीं, ये नेक्स्ट चेक करो जी। वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो, झाड़ में आ जा कुछ नहीं। येलो दाल तकिया वाली रहती है, दाल ये चेक करिए। नेक्स्ट रहने वाला है जी व्हाइट चावल। बफे में हमारे पास बटर नान भी रहता है, तंदूरी रोटी रहती है, मिस्सी रोटी रहती है, ये आलू मटर जैसे ये रहने वाला है कढ़ाई पनीर, चाइनीज भी इसमें इंक्लूड रहने वाला है, ये चेक करो जी नूडल्स। नेक्स्ट रहने वाला है जी पास्ता, नेक्स्ट रहने वाला है आलू, ये चेक करो जी। साथ में रहेगी सैलेड और इसके अलावा ये हमारा रहता है स्पेशल लेमन पिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्वेयर कैसे कर पा रहे हो ना, मेरी समझ से बाहर है। सर ये बहुत लोगों की समझ से बाहर है, तो आज आपकी वीडियो हम क्लियर कर आज कर ही दो, लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी हमने आपके बिजनेस का पार्ट जान लिया अब हमको जानना है 3 बिजनेसेस हैं हमारे। एक तो हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सेकंड हमारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, थर्डली हमारी आउटडोर केटरिंग है। तो हमारा ऐसा जो फूड बनता है वो बल्क स्केल पे बनता है, तो खाना इकट्ठा बनने पे उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। तो मेन रीजन ये है कि हमारे पास फुटफॉल होना बहुत जरूरी है। अगर फुटफॉल नहीं है, लोगों का आना जाना कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है चलाना। कितने कस्टमर मिनिमम चाहिए एक बैलेंस में रखने कम से कम 1000 बंदों की डिमांड तो मिनिमम चाहिए डेली। क्या उतना आता है? सर आतंकवाद के पास 800 से 1000 ओवरऑल। भाई एक ये सारे जो है ना सिर्फ ब्लेसिंग लेके नहीं जा रहे, कुछ हेटर्स भी। भाई एक कह रहा है मैंने -5 दिया क्योंकि गूगल ने मेरे को इतना अलाउड किया था, अगर -5 होता तो मैं उतना देता क्योंकि मेरे को रोटी टचिंग थी। इसमें पता क्या है, हम किसी को भी हर टाइम क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। हमारी सुपरविजन जब तक है तब तक क्वालिटी कंसिस्टेंट है। हम थोड़ा सा साइड पे जाते हैं तो लेबर को थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ है डाउन है, हम ये बाद में पढ़ते रिव्यूज, उसके बाद हम इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे चपाती की कंप्लीट आई ना, हमने साथ में एक न्यू मशीन परचेज करी। पहले हमारी होती थी बल्क स्केल पे चपाती बड़ी मशीन थी, अब हमने कुछ छोटी मशीन ले जिससे थोड़ी बड़ी रोटी बनेगी, कुछ घंटे के इंटरवल के बाद बनेगी। अच्छा ये कह रहा है कि अगर लो कॉस्ट ऑप्शन चाहिए तो ठीक है, पर फ्लेवर क्वालिटी चाहिए तो सही जगह ले। को मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, जैसे कोई बंदा 1000 रुपए का खाने वाला कस्टमर है, उसकी एक्सपेक्टेशन ना सर्विस की क्वालिटी की उस लेवल की हो जाती है। तो ये थोड़ा फर्क आ जाता है सर्विस में। तो 99 ऑलरेडी वाज अ वेरी सरप्राइजिंग प्राइस फॉर मी, बट मैं ये देखकर भी हैरान हूं कि उसके अंदर रोटियां भी अनलिमिटेड है, नान भी अनलिमिटेड है, जो जितना चाहे लेना चाहे। आपने इतने मेरे को तरीके बता दिया ना, मेरे को तब भी अनबिलीवेबल लग रहा है। सो लेट मी गिव इट अ ट्राई, आई विल स्टार्ट विद पास्ता।
ठीक है पर ये मैंने कुछ दिनों मैंने खाने से कर दिया मैं थोड़ा ओए बोलने से करता था और फिर भी इसको खा के बोल रहा था ओए क्या बात दिस इज चाउमीन विल हैव सम पनीर भाई लेट्स गो चेक करो डैम बढ़िया पकड़े बताओ जी कैसे मैं समझ गया भाई मैं समझ गया कि तुम्हारे ऊपर वाले का आशीर्वाद है यार क्या सवाल है यार वेरी गुड भाई दाल मखनी यार ये देखकर मेरे को अनबिलीवेबल लगा यार ओह माय गॉड भाई फैंटास्टिक फैंटास्टिक आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग काफी लोगों को काफी शिकायतें भी हैं मैं मानता हूं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अगर 99 में 99 वाली एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे ना तो उसको ये बहुत अच्छे नंबर से बीट कर देगी मैं बता रहा हूं मेरे को फील हुआ है मैं 250 300 पे जेन्युइनली सर अच्छी बात है लोगों को करना चाहिए क्योंकि हर शहर में हर क्लास का बंदा है हर बंदे का मन करता है यार मैं पनीर खाऊं करी खाऊं नूडल्स खाऊं पास्ता खाऊं अब मेरे जेब में 100 रुपए का नोट है बस तो मैं भाई कहूंगा पाजी बातों बताना सोच समझ के करना कि आपकी बैंड बज जाए क्योंकि दिस नॉट एन इजी जॉब मेरे लिए बहुत अनरियलिस्टिक है एंड व्हाट आई फाउंड आउट टुडे इज वेरी नाइस पाजी वंडरफुल थैंक यू सो मच आई हैव टू शो यू वन मोर क्रेजी अनलिमिटेड पीएस कॉन्सेप्ट दैट दिस इज द थर्ड स्पॉट एंड फाइनल स्पॉट ऑफ आवर डे जिस पर मैं आया हूं मेरी पिछली बार विजिट करी हुई दुकान शर्मा पिज्जा पॉइंट जो कि जाना जाता है अपने 149 रुपए में लिसन भी वन सेकंड 149 रुपए में अपने से बता दे क्या पिज्जा है कोल्ड ड्रिंक और गार्लिक ब्रेड कोल्ड ड्रिंक बोली नहीं वाली कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है 2 लीटर वाली बकायदा खोल करके कोल्ड ड्रिंक डालता है उसके अंदर मैं सच बताऊं कोई अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक भी जाना तब भी 149 वसूल कर लेगा ये कैसे कर रहा है क्या मास्टरमाइंड है क्या जीनियस है टेस्ट कैसा सारी चीजें देखेंगे उससे पहले मेरे को से बात करेंगे आज बाबू मैं खाली पिज्जा खाने नहीं आया आज मैं चीर फाड़ने आया आज मैं अंदर जाके आया अब मेरे को बता दे चुपचाप ये क्या दाने वाली है कहां से तेरे पास ब्लैक मनी आ रही है जिसको तू व्हाइट करने के लिए दुकान चला रहा है मेरे को सीधा सीधा बता दे दैट्स इट जैसे किसी व्यापारी ने तेरे को अप्रोच किया मेरा ये काला पैसा है अब तेरे को व्हाइट करना है तू अनलिमिटेड पिज्जा खिला मेरे पास व्हाइट में पेमेंट आ जाएगी मस्त प्लान है आपका कोई करना चाहता है कॉन्टैक्ट करना है अच्छा मेरे को बता कि जेन्युइन सीन क्या है 149 में जाओगे तो पिज्जा मिल जाएगा मैं भी बस पिज्जा के साथ गार्लिक और कोल्ड ड्रिंक करके देता हूं 149 में कम रहता है ज्यादा लोग पे 2 गार्लिक और पिज्जा बढ़ जाता है 2 पिज्जा गार्लिक बैठा पाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट होता है उसमें बस ऐसा होता है कुछ लोग ज्यादा खाते हैं 5 पिज्जा 6 पिज्जा उसमें लॉस जाता है कुछ लोग ऐसा होता है कि एक पिज्जा वेट बताता है तो वो कवर हो जाता है चल मेरे को इतना बता एक पिज्जा गाली मेरी कोल्ड ड्रिंक लेता है वो कितने का पड़ता है वो मुझे पता है ना वो 150 के आसपास ही पड़ता है सारे हट 150 के आसपास जो बोला है कमीना आप कितना बताओ मेरे साथ 70 का बताओ ताकि 70 रुपए में एक पिज्जा गार्लिक और कोल्ड ड्रिंक थोड़ा मुश्किल है उसमें लेबर कॉस्ट होती है बहुत सारी कॉस्ट होती है चल बता ना तू जेन्युइन सच बता मुझे लगता है 150 का अरे चल बोल रहा है फिर जब एक कितना का बढ़ रहा है तो 4 डॉलर बनते हुए आज तो बोल रहा हूं कि एक बंदे का पेट एक का 2 कॉम्बो कॉस्ट बेच रहा है नो प्रॉफिट मतलब ये है कि एक लोग से 1 रुपए कमाओ 10 लोग से 10 रुपए कमा लेता है ये आईफोन आ रहा है 1 रुपए का ये बता दे कितनी प्रॉफिटेबल है ब्रेक में भी चलता है कोई प्रॉफिट होता है किसी में प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट कैसे कमाया जा रहा है 149 में प्रॉफिट कैसे कमा रहा है कोई एक पिज्जा खाता है कोई 6 पिज्जा खाता है तो तू तो बोल रहा है एक पिज्जा भी कॉस्ट पड़ता है एक पिज्जा गार्लिक और कोल्ड वो कॉस्ट पड़ता है और 6 लॉस में पड़ता है तो साले तू प्रॉफिट कैसे है ड्रिंक एक ही पिज्जा खाता है ना तो वो कॉस्ट पड़ता है ना अभी तो अभी इसने भाई मैंने खेला पिज्जा गार्लिक और कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट पड़ता है लिंक में बस एक ही पिज्जा गार्लिक पता है कोल्ड ड्रिंक पता है ओके विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर हमने को पिज्जा खिला बाकी बात करेंगे देखो जितनी एक्सप्लेनेशन दे मेरे को अभी भी इस पे डाउट हो रहा है लेट्स गो एंड चेक फ्यू थिंग्स आदित्य इधर आ बाबू चेक हुई ये वो है ऑलिव एंड हां बोलिए क्या बोला ये रेड का ये ब्लैक ऑलिव है और ये एल्बिनो हां ठीक है अभी ब्रदर अभी यूज करता है तू और ये है कॉर्न ये है हमारी चीज पीछे देखो पीछे सच बता पीछे देखो बोल ये लिखा जनवरी 2027 चेक आउट हमारा पिज्जा में चालू है चीज बस बनाना है चीज बट पिज्जा बनेगा इसमें कैसे होता है अच्छा बात बताओ एक छोटा सा ब्रेकअप दे दो अपनी सेल्स की कितनी मिनिमम डेली की सेल चाहिए इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखने के लिए अगर आप बताओ यार मुझे कितना मतलब नहीं हो रहा मेरे से यार पिज्जा कितना हो गया है वाह straight out of the bottle damn and with that our beauty of 149 is ready first of all unbelievable मैं अपने सामने जो देख पा रहा हूं ना बहुत सिंपल कॉम्बो एक कैफे कम से कम 250 300 रुपए का होगा मेरे हिसाब से बट यू आर टेलिंग मी ये 149 का है और ये अनलिमिटेड है चेक करो बाबू ओह माय गॉड चीज है स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड लेकिन 149 वाले प्राइस में 500 वाली एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता अपने दाम के हिसाब से नहीं होगा वाह वाह भाई वाह कैसे कर रहा है आई डोंट नो पर आई एम वाले जो है ना उनको इससे मास्टर क्लास लेनी चाहिए हाउ इजी मैनेजिंग टू पुल दिस ऑफ पिज्जा ड्राइवर चीज बट ऑल लोडेड लेट मी गिव इट अ ट्राई ये देख मैं एक स्लाइस में ब्रेड बन जाए मेरा तो पिज्जा की बात कर रहा है यार Oh my God, बहुत बढ़िया वाह कुछ भी हो इसमें कमी नहीं छोड़ गया इस putting his heart he's putting his sweat he's putting his blood into this venture very good job मेरे भाई I wish you all best इस तरीके से और कामयाबी करो और ज्यादा दुकान खोलो बट जाते हैं मुझे एक चीज बता दो कितना पैसा बनता है आपने नहीं बताया ये यार इसी के साथ थैंक यू सो मच वॉचिंग फालतू की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए वेरी गुड पिज्जा वेरी गुड गार्लिक वेरी गुड कोल्ड ड्रिंक आई सी नेक्स्ट वन टेक केयर बाय बाय अभी बारी आऊंगा जब ये 99 रुपीस में अनलिमिटेड क्या लिखा है अनलिमिटेड मोल दिखाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक और प्राइस सी यू नमस्कार जय भारती दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जय भारती सबको। नीरज कौन भाई थम्स अप आ गए हैं, सबको धन्यवाद। जल्दी शुरू करेंगे आज। धन्यवाद आ गए सबको, राम राम सबको, जय भारती भाई सबको राम राम। बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं आज, सबको नाम लेकर धन्यवाद नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि लेट हो गया। मैं जल्दी आना चाह रहा था, किसी के नीरज अत्री हैं उनके साथ लाइव करने का प्लान था तो उस चक्कर में डिले हो गया। वो उनको कुछ काम आ गया, टाइम पे उनको किसी न्यूज़ चैनल पे बुला लिया गया, सुदर्शन न्यूज़ पे, तो फिर वो बोले क्या ऐसे हो गया, तो मैंने कहा कोई नहीं, इस चक्कर में डिले हो गया, मेरे को थंबनेल वगैरह फिर से बनाना पड़ा। जय श्री राम, जय मां भारती है सबको। दोस्तों बात है जनवरी की। यही धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने आज रिजाइन कर दिया, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे और ये यूजीसी के कानून लेके आए। एक ऐसा देश जहाँ पे SC/ST कानून का दबा के दुरुपयोग होता है। कोई गली मोहल्ला, कोई नुक्कड़ ऐसा नहीं मिलेगा इस देश का जहाँ पे कोई भुक्तभोगी ना हो जिसके ऊपर SC/ST एक्ट में झूठा केस चल रहा हो। इस देश की हाई कोर्ट्स मान चुकी है इस बात को, सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है कि भाई SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, दबा के किया जाता है। ऐसे देश में धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी के कानून लेके आते हैं, जिनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं कि मैंने कहा यार जनरल कैटेगरी के बच्चे जो पहले ही ये झेल रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे जो पहले ही ये झेल रहे हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन बच्चों को ऊपर आप अब यूजीसी के ड्रैकोनियन लॉज की तलवार लटका रहे हो। पहले ही इस देश में SC/ST एक्ट का कानून इस देश की कोर्ट्स मान चुकी हैं, हाई कोर्ट्स मान चुकी हैं कि भैया SC/ST का कानून अपनी आपसी पर्सनल रंजिश को निपटाने के लिए, लैंड डिस्प्यूट्स में प्रयोग किया जाता है, पर्सनल दुश्मनियों में इसका प्रयोग किया जाता है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। उस देश में जहाँ पहले ही एक SC/ST एक्ट जैसा कानून है जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, वहाँ पे आप यूजीसी के क्यों ला रहे हो? SC/ST एक्ट का कानून तो स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो हमने इसके ऊपर आवाज उठाई
तो हमें बहुत गाली दी गई। अब मैं उन लोगों को से बात कर रहा हूँ जो भाई हैं, जानते हैं उनके, तो कोई वो तो अपने भाई हैं, जो यहाँ पे आके हमें बीजेपी का चाटुकार और बीजेपी से पैसा लेने वाला बोलते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ हमारे साथ क्या किया गया उस टाइम पे, जो हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब हमने यूजीसी के उनका ड्रैकोनियन लॉज के जो रूल्स लाने का प्रयास किया जा रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाई, हमने कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो हमारे साथ क्या किया गया उसी बीजेपी आईटी सेल के लोगों द्वारा। अजीत भारती की माता जी का देहांत होता है 2 फरवरी के दिन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी स्वर्गीय मां, अजीत की स्वर्गीय मां तक को नहीं बख्शा गया, घसीटा गया उनको। एक बेटे ने अपनी मां को खोया है और सोचो उसको सोशल मीडिया पे अपनी उस मां के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यूजीसी के कानून गलत है और धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। वो लोग जो मुझे कभी कहीं उधर प्रोग्राम में मिल जाते थे तो मुझसे कहते थे, अरे गौरव भाई क्या वीडियो बनाते हो, क्या मस्त यार, ऐसा लगता है बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, बॉलीवुड भी आपके आगे फेल है। गौरव भाई करते थे। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तू तड़ाक पे आ गए, मैसेज कर रहे हैं तू तड़ाक पे आ गए, मुझे मैसेज करके बोला गया, तो इतना ही बड़ा ब्राह्मण है तो दे दे प्रधान को श्राप। साले तू इतना बड़ा ब्राह्मण है तो दे दे प्रधान को श्राप, हो जाएगा उसका इस्तीफा। श्राप तो मैंने नहीं दिया था। एक आदमी जो किसी का पिता है, किसी का पति है, उसको श्राप में कैसे दे दूं? श्राप तो मैंने नहीं दिया था। लेकिन सोमवार के एक दिन मैंने शिवजी के ऊपर जल चढ़ाते हुए, शिवलिंग के ऊपर मैंने शिवजी से प्रार्थना की थी, कामना की थी कि मैंने कहा शिवजी भोले बाबा इस आदमी की कुर्सी जरूर गिराना। मुझे ये नहीं पता था अपना मुंह काला करके गिरवाएंगे। आज थूक के चढ़ा है इस बीजेपी ने और आ गए हैं आईटी सेल वाले मास्टर स्ट्रोक। अब वो मार्केट में आ गया। शेयर जब 6 कदम पीछे हटता है तो उसका मतलब ये नहीं। तुम्हें शेयर का सक्सेस रेट पता है? शिकार के समय कितना होता है? 10% से कम होता है। यानी कि शेयर जब शिकार पे निकलता है तो उसकी जो फेलियर रेट है वो 90% से ज्यादा होता है। एक देश जहां पे जनरल कैटेगरी को पहले ही ये झेलना पड़ता है और जनरल कैटेगरी की कोई बात नहीं करता, वहां पे ये यूजीसी के कानून लाए धर्मेंद्र प्रधान, हम लोगों ने शोर मचाया तो हम लोगों के साथ ये कर दिया गया। हमने कहा 14 जनवरी के दिन रामलीला मैदान पहुंचो, तो जो था अजीत भारती था, मैं था, प्रीत रोही, स्वामी विज्ञानंद, सबके घरों पे पुलिस भेज दी गई। सबको मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन मेरे घर के नीचे बिल्डिंग, मेरे घर पे दरवाजे पे नहीं आई पुलिस, लेकिन 2 पुलिस वाले नीचे खड़े थे। जब मैं नीचे उतरा तो मुझसे उन्होंने पकड़ लिया, बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए थे कुर्सी डाल के। हम लोग, मैं 2 वीडियोस बनाता हूं आज से 3 साल पहले। एक वीडियो दोनों पीएफआई के ऊपर, एक वीडियो था पीएफआई का जन्म कैसे हुआ और कैसे कांग्रेस और ये लेफ्ट विंग के राज में पीएफआई को साउथ में फलने फूलने दिया गया, मजबूत किया गया और कैसे पीएफआई भस्मासुर बन गई। उसमें मराठ बीच का जो हत्याकांड था, जब पीएफआई वालों ने ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू मछुआरों को 6 मछुआरों को दिन दहाड़े काट दिया था केरला के मराठ बीच पे, वहां से वो डॉक्यूमेंट्री पहले वाली शुरू होकर खत्म होती थी, पीएफआई कैसे स्ट्रांग बनी और कौन इसको खत्म करेगा। फिर जब इन्होंने ऑपरेशन ऑक्टोपस करके खत्म किया, मैंने उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कैसे लोगों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस करके पीएफआई को खत्म किया, बैन लगाया। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत अच्छा ऑपरेशन था वो। जब मैंने वो बनाई तो मेरे को धमकी आने लगी दिन रात, मेरे घर में घुस के कर देंगे, वो कर देंगे। जब फोन के ऊपर आई, जब तो कमेंट्स में आ रही थी, कमेंट्स को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ज्यादा जो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं धमकी वाले या गाली वाले, उनको हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि लेंगे तो काम कर ही नहीं सकते ना, अगर उनको हम अपने दिमाग में घुसा लेंगे। लेकिन जब आपको फोन पे धमकी आने लग जाए, इसका मतलब यार उन लोगों के पास आपका फोन नंबर पहुंच गया। तब मैं पुलिस के पास गया, मैं तो मेरे को एक दिन स्पेशल सेल लोधी रोड से बुलाया गया, लोधी कॉलोनी से मेरे को स्पेशल सेल ने बुलाया कि आप आ जाइए। मैं वहां पे गया तो स्पेशल सेल ने मुझे, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा सतर्कता से, मुझे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट पकड़ा दी कि थोड़ा सतर्कता से रहिएगा, आप कहीं आ जा रहे हैं, कहां आ जा रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बताते भी हैं तो गलत बताएं, किसी को आने जाने का समय और अपना किसी एक जगह पे लगातार आपका आना जाना है, कोई ऐसी जगह जहां पे नियमित रूप से आते जाते रहते हैं तो हर बार अलग रूट लीजिए। ये बात मेरे को सोचो, जब वो मेरे को पुलिस वाले स्पेशल सेल के लोग जब मेरे को ये बता रहे होंगे तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई बातें, मैं अंदर झेलता रहा। तो एक साइड तो हमारे खिलाफ थी, एक साइड तो पहले ही हमारे खिलाफ थी, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर जिनको राइट विंग का कहा जाता है, राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स। एक साइड तो पहले ही हमें जान से मारने की धमकियां दे रही है, हमारे पर फतवे जारी किए हुए थे। दूसरी जो साइड थी बीजेपी, जिसका हमें चाटुकार बताया जाता था, ये भी हमारे खिलाफ हो गई। क्या क्या नहीं बोला गया, हमें रामलीला मैदान तक नहीं जाने दिया। हमने तरुण के ऊपर, जो होली के दिन तरुण को मारा गया, And here on New Year's Day, does some struggling teams see this as a chance to hit the reset button? Yeah, BA. You know, when you're struggling, you're always looking for the reset button. And there's no better excuse than January 1st. New year, new start. And despite some of the challenging buildings to play in on the road in the NBA, MP and his team have made it a point to win tough games away from home. Easier said than done in this league. And sometimes these kind of declarations can come back to bite you. But in this case, I like what MP is doing. He's setting this objective to challenge himself and his teammates because he believes they're good enough to take care of business on the road.
Here's the starting group for Portland. Inside, we'll see Kamara and Klingon. MP is out there with Scoot Henderson, and it's Avdia in at the 3. And let's check in with Allie. She's got the latest on MP. We all know winning on the road is not easy in the NBA, and when I talked to MP earlier, he made it clear that he is up for the challenge, telling me, quote, when we're in a tough building with all of the noise, I lock in even more. Reminds me of all the doubters, all of the places I've played where I had to prove that I belong. It's fuel for my fire, Allie, he told me. Certainly sounds like he's fired up tonight, guys. More than willing to play the villain. Thank you. And the Mavericks with possession here. After the basket by Portland. Back to Carter. Lively with a screen on MP. Carter can't get it to go. Boy, taking what's there. Very good shot selection, just not the result you hope for. MP shot is off. Boy, just a tough time making shots. Only 1 for 5. They just need to settle in here. Portland has gone 0 for 2 from outside, and the Mavericks have stressed the importance of defense to winning at the highest level, Grant. Yeah, B.A., they felt that fortifying the team at that end of the floor would get them closer to contention. And look at them. They're making some bold moves there along the way. Now here's Henderson. 15 in his last outing. Kicks it out to MP. The 3. Misses again, now 0 for 3. Well, despite the miss, obviously the shot this offense looking to generate is exactly that. Carter, the pass to Lively. Nice assist and nice finish. Solid play all the way around. Setting an aggressive tone early, challenging the heart of that defense. Henderson finds MP. And he lobs it up. Powell with a steal. To the middle. Here's Carter. Lays it up and banks it in. Just taking it right to the rim, and no one was there to greet him. I think defensively, that is not the way you want to start. Giving up high percentage looks, that doesn't typically end well. Let's take a look at the Western Conference standings now that the new year is upon us. You look at Portland, sitting pretty at this point of the season, second place and looking to move to first. And checking out Dallas, they're in 9th place. Checking out Portland, there is a lot of talent on this team, and they've delivered. They're having a great season, and it's only left their fans wanting more. Well, how about the momentum they have built to get off to this fantastic start? All positive vibes right now for this group. Yep, count it. What a great look by MP. He just finds a way to deliver. And so it's Carter who brings up the ball for Dallas. Pass to Lively. Here's Flag. Washington outside. Some nice ball movement by Dallas. Powell's shot is off. Just under 3.5 minutes elapsed here in the first quarter. The offensive rebound. Basket's good. Well, this guy's job is to crash the offensive glass, and he does it at a high level. And he's going for the oop here. Hammers the lob through. Great teamwork and great timing. Oh, spectacular play. MP looking around. Henderson outside. Back to MP. Pass to Henderson. And here's MP. Now covers. 6 to shoot. Down low. Here's MP. And the layup is good off the glass. Yeah, attacking on the interior, MP can be relentless. Here's Flag. Washington, a screen on Avdia. Now here's Carter, covered by MP, and it's slammed in by Carter. Wow! Always fun to see point guards who can elevate above the rim like that. Oh, a strong mindset and even stronger finish. Boy, it's incredible how much explosive scoring ability can come from the lead guard position. That is a big-time play. Avdia passes to Henderson. Fires in the triple. You don't want to let him get into a rhythm from out there. Mavericks trail by 3. 4 seconds separating the shot and game clocks. The floater. Avdia with a steal. Pass to MP. Oh, and the dunk by MP. You have to go back to that impressive job on the defensive end. Avdia not afraid to take risks. It pays dividends there. Takes a step back. Up to Powell. Over Henderson. And that's not going to go. And that does it for the first quarter. Trailblazers out in front, up 5.
quarter number. Some changes. Washington's checked in for Marshall. Flag comes in for Neesmith. And it's Powell in for McBride. And the Trailblazers making a change here as well. MP's checked in for Harrison. So the Trailblazers 5 right now. They've got MP. He's out there with Shaden Sharp. And it's Wise in at the power forward. Screen by MP. Avdia, good. They're shooting the three extremely well this quarter. Be fun to see if they can keep it up. Washington outside. Powell outside. Pass to Flag. Shot clock at 5. Powell sets a screen. Again, the miss by Dallas. Portland leading by 6. MP outside. Sharp passes to Avdia. To the paint. Powell with a steal. A moment to hear from Allie LaForce. Well, MP in the last matchup against the Pistons had a huge game. He dropped an amazing number of points and hit a bunch of threes. No surprises there. And he was huge for them in that one. Talking to his coaches pregame, they hope he can repeat that performance with another one here tonight. Back to you. That's good stuff, Allie. And the only question now, how does he follow up that performance? Yeah, each night comes with different challenges, and I'm sure their opponent has seen the film. What you love about this guy, though, is even when the defense adjusts to what he's doing, he'll make an adjustment right back. He is always ready with a counter. Here's Flag. Still no points. Shot clock at 6. Pass to Bufkin. The 3 is up. Knocks down the long J. Well, this offense certainly thrives when he's knocking those down. Powell against MP. Oh, it's stolen away. Now Washington. Here's Bufkin from outside the arc. Oh, his shooting remains on point. 3 for 4 thus far. He's finally leaving that dismal first quarter behind him. Took him a while to get going. And so MP will bring it up for the Portland Trailblazers. Next matchup, they'll be at home against the Wizards. And that's a one-game homestand for the club. For Dallas, they've gotten 5 of 7 shots to go in the second. Pass to Bufkin. Here's Flag. Defended by Avdia. Now here's Powell. Here's Diawara. And that misses. That would have put him up. This has been a close game in a lot of ways, but they do have an edge on the board. Muscling it home, MP. Well, shaky start. He's putting that in the rear view and finding his groove. Dallas has gone 3 of 6 from outside in the second quarter. There's 42 seconds left to play in the first half. Here's Washington, and the officials call goaltending, so they'll award the basket. I mean, he had the right idea, but his timing was just a little off, and it resulted in a goaltend. Derek Lively, he's checked in for the Mavericks. Carter comes in for Bufkin. Portland moving it around. Screen by MP. Six on the shot clock. Inside. Here's Klingon. Good, and the assist goes to MP. Klingon's got 6. And once more this half, they find a way to get great position inside. Here's Flag. Carter from outside. That misses. Would have counted had it gone. And we're through the first half of play here in what's been a good one. It's the Trailblazers. They lead by 2. We'll take a quick break and then get you back to the action. I usually only see Shaq drool when it comes to food, but their performance on the board tonight, it's getting to him a little. All right, next. Thanks for joining us. Time to head back over to the... Welcome back, everybody. Happy New Year's to all of you as we continue our broadcast.
We see teams in college and high school run a lot more full court press. Why is that less prevalent in the NBA doors? Oh, wow! MP, unreal! You gotta love MP's creativity. It's so fun watching him throw it down like this. What a sensational move, captured from the Connected Cam, sponsored by AT&T. Powell outside. Pass to Lively. Carter from outside. He buries it from 3. 7 points in the game. This defense just can't stay connected to shooters. Outside Kamara. And here's Henderson. MP high post. MP making his presence felt. Very little resistance around the rim right now. That's the 5th straight bucket they've given up in the paint. Carter, the pass to Powell. Back to Carter. And here's Flag outside. Avdia pulls it in. Portland leading by 3. Henderson finds MP. Ooh, MP takes the contact and converts. Man, that's now 10 straight points in the paint. I'm not sure what's happened to their defense. Carter against MP. Pass to Flag from deep. And it's Portland with a rebound. Bad defense, bad shot. Neither working on that play. Grant. Oh, okay then. Wow, that type of finish is just deflating right now for a team that's trying to make a comeback. Ouch. That's certainly a big-time finish right there. It was one big exclamation point, or maybe even a question mark. Now Carter from downtown. And there's a foul. It'll go on to Monty Kamara. That's his first foul. First team foul. Two minutes into the second half of play now. Carter from outside. This certainly isn't how they wanted to start this half. I mean, just 1 for 5 coming out of the break. That is brutal. Oh, deflected. Stolen by Carter. Powell outside. And here's Flag outside. Buries it from 3. Flag's gotten himself going with a triple. His first basket of the game. The simple bounce pass works at any level, including the highest level. Taking a look at some numbers here for MP. And he's had a rough past 5 games. He's had trouble finding his offensive rhythm and just hasn't been as effective as he'd like to be on that end. But this is something all players go through, and I'm sure he'll fight his way back. Here's Flag. He's given them steady production at over 27 points a game. Offline with a 3. He's looking pretty unsettled at the moment. Doesn't seem like he has a great feel for his shot. Powell against MP. Out to the right wing. Up top Henderson. Clock at 6. Here's MP. The shot off that time. Oh, nice D from Carter. Wide open. And Flag gets it to go on the assist by Carter. Flag's got 5 points now this quarter. Portland leading. Gives us a chance to catch up with Allie LaForce. Thank you, guys. Derek Lively uses his mobility to his advantage. He said, quote, "I like to turn the game into a track meet because I can't out-muscle anybody. But I can definitely get around people, I can outrun them, and I have to be able to use my stamina and energy to get up and down as much as I can." Back to you, Brian. Smart approach. Allie, appreciate the report. Looking at the 2K leaderboard, here are the teams that have been consistently dominant on the offensive end of the floor over the last month. Portland, number 1. Offensively, people are moving without the ball, making the extra pass, and that's led to a high shooting percentage for them, really, over the last month. Pass to Diawara. Launches it. Dallas, no good that time either. To the inside. Laid it in with a nice touch off the window. And now a 6-point Trailblazer lead. And talk about imposing your will. That's 10 straight points in the paint. Carter, the pass to Diawara. Nice ball movement by Dallas. Pass to Bufkin. The 3. Portland grabs the miss.
Wise has got his 4th rebound in this one. I'll tell you what, they've been aggressive and they've been physical. Sharp finds MP. The shot's good. MP's got 10 points in just the second half. And guys, the way this defense is getting manhandled down low, you have to wonder if they're at 100% right now. Now Carter, he has 7. From the line, no good on the buzzer beater. And so it's MP making things happen for Portland. All right, let's listen in. Head coach Jason. We're not talking to each other. Offensively or defensively, let's talk. Let's making a change here. Lively's checked in. MP's checked in for Portland. Henderson comes in for Harrison. 4th quarter still young, just over a minute played. And that one, good. Setting each other up beautifully. I love it. 8 of their last 10 points coming off assists. Taking a look at the Trailblazers. It's Scoot and Sharp in at the 1 and the 2. Denny Avdia out there with MP. Covered by Lively. Back to MP. Lively grabs the miss. Boy, the defense hanging in right there, making that shot really difficult. Pass to Bufkin. Fires the 3. Portland with a rebound. Here's MP. MP throws it down off the drive. I'll tell you, take the momentum from the drive as a launching pad. MP ready to go. Last quarter of play, about 2 minutes in now. Mavericks trail by 11. Here's Diawara. Lively with a screen on Henderson. 5 to shoot. Ooh, the 3 doesn't go. So far, rebounding has been a big factor tonight. Yeah, I like seeing MP attack down low. I mean, because sometimes it forces the D to foul. And some stats here, guys. The scoring breakdown for Portland. Well, the defense looks helpless trying to contain them in the open floor, and they've continued to exploit this advantage. Something else that they've had working for them is attacking the offensive glass. Boy, taking advantage and creating second chance points. Impressive. Klingon, he's checked in for Portland. Kamara comes in for Sharp. Guys, for me, something you have to admire about MP is the tenacity he plays with. Every single moment he's on the floor, he's giving you his best effort. Well, these are the plays he's looking to make every single trip up the floor. Very offensive-minded guy. He's their go-to. They keep calling his number, and he delivers. Mavericks trail by 12. 4th quarter keeps moving along. 3 minutes gone by now. Flag. Carter fires. Money from 3. Coming down the stretch, they've leaned on the perimeter game. Boy, the three-point arc has been a major factor in what they've done here tonight. You love the aggressiveness. They got very fortunate there, guys. They should just take their time on offense and not try to force things. Portland leading by 9. Off the outside. Here's MP. Yes! Using that window! You have loved the attitude of MP tonight. He's looked for his shot from the opening tip, and he's been so involved. A bit under 3.5 minutes have passed here in the 4th. Well, that's the opportunity they're looking for, just not the result, obviously. It's stolen by Washington. Carter outside. And it's Denny Avdia with the foul. That's his first foul of the game. First team foul. Here's Flag. Powell outside. And Klingon over to help. Powell with it. Guarded now by Klingon. Now Powell. Down to 5 on the shot clock. Takes a 3. Avdia rips down the board.
Well, Portland's shooting an efficient 64%. Excellent. Nothing left to do but to watch the clock tick towards 0. Nice victory here for the Trailblazers. They made a point to get some good looks. Yes, they were able to pound the ball inside. I love it. And this will go down as win number 25 for them this year. And with just one game left to play between them, they've captured the first 2 meetings of the year. And as it was happening, as it was building, you knew this was a monster game for MP. This is the very definition of being in a zone. Everything the defense tried against him, he had an answer for it. Flag outside, and Henderson comes to help. Here's Powell. Nice! That one's good. It's Abdia on the wing. MP outside. Now Henderson. And he nails it. And they knew it wasn't going to be easy to win on the road, but they've controlled the pace on this one. And sometimes when everyone's rooting against you, it seems to bring the unit closer together. It certainly did tonight. And that's in. So it's Portland now. They held a 12-point lead earlier. Boy, I think MP expected the foul, maybe even wanted the foul. Oh, the first of 2, no good. A heartbreaker. And that trip coming up empty, missing both. Cooper flag. Oh, he can't hit a tough 3. MP. Oh, can't hit the jumper. And so Portland takes the win. Exceptional. All right, you seen MP's pregame ritual earlier? You. I know you work for the other team. You better come here. You can still hug me, boy. Man, let's go. That's what I'm talking about. We hype out here. But this here is post-game.